And on to the big story this evening, viewers, you may recall the riots that occurred in northeast Delhi in February 2020, in which 53 people lost their lives and more than 581 were injured. Today, we're once again going to be talking about that big blot on the national capital because a Delhi court has convicted 9 people in connection with the riots. But what's all the more sensational is the court's observation. One couldn't help but highlight the same because it has once again busted the Muslim pogrom narrative that was peddled by a whole ecosystem. Today, the broader plot to target Hindus has once again been established. We tell you how in the complaint filed by Rekha Sharma, remember, whose house was destroyed when rioting gripped East Delhi, the additional sessions judge ruled that it was well established that all the named accused persons in the case became part of an unruly mob which was guided by communal feelings. She observed that the common objective was to cause maximum damage to the properties of persons belonging to the Hindu community. If we move on and talk about the Rahul Solanki murder case, because we're talking about 2 cases in specific with regards to the latest developments coming in from this Delhi court, 8 accused in the Rahul Solanki murder case have been charged with murder and arson, and the court has once again noted that a righteous mob attacked people of one particular community. And while the additional sessions judge has left nothing to doubt by stating how this was mindless firing and mindless pelting of stones to target specifics, the family of Rahul, while narrating their ordeal, also spoke to Times Now, spoke of the circumstances under which they were forced to shift to another house. They said that Rahul was targeted only by the virtue of being a Hindu. किसी ने नहीं बताई गोली लग गई है, चोट लग गई है। उसके पापा चोट सुन के तुरंत ही बाहर निकल रहे, लेकिन मेरे को पता नहीं थी कि बेटा का ऐसा हो गया। मैं भी भाग जाती और वहाँ के ने फिर वो टॉर्चर करने लग गए हम लोगों को। कौन ये घटना के बाद आपको टॉर्चर करने लग गए? क्या बोलते थे? आए करे तुम स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो, ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं 8-8 लोग 10-10 लोग मुसलमान, तो तुम स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट घर आते थे कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसे कंप्लेंट कर रहे। मैंने कह दी कि मेरा बेटा गया है, मुझे पता है ना, तुम्हें थोड़ी पता है, मेरा बेटा गया है कि अच्छा नहीं कर रहे। हम 30 साल से तुझे यहाँ रख रहे हैं, तुझे पाल रहे हैं, हम रखा रहे हैं तुझे, इस तरीके से। वो बेटा मेरा पीछे देख रहा था जी, सब लोग आगे खड़े थे। उन्होंने वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये थोड़ी देखा कि ये मानना है, ये मानना, ये थोड़ी देखा, ये वो तो गोली चला दी पीछे थे। और टारगेट क्या मैम, वही था कि बस 2 पक्ष हैं, 2 गुट में लड़ाई होती है कि एक तरफ है हिंदू और एक तरफ मुस्लिम है। बस वो है कि हिंदू अपनी सेफ्टी के लिए खड़े हुए थे कि घर को बचाने के चक्कर में कि हमारे घर में ना आ जाए, हमारे घर ना जला दें। और वहाँ पे टारगेट बना रखा था, वहाँ कट्टे ले लेके खड़े थे। और वहाँ तो कोई था ये नहीं था मेरे भाई को टारगेट बनाया हो। बस क्या मैम, कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, जिसका जाता उसको पता लगती है। क्यों शिफ्ट हुए? वो जो घर आप वहाँ रह रहे थे, वहाँ से यहाँ पर क्यों आए? प्रेशर टॉर्चर करा जा रहा था ना। Times Now, in fact, managed to confront an eyewitness as well, who's also Rahul's cousin, who accompanied Rahul Solanki on that fateful day. He too says no verbal argument took place and Rahul was targeted only because he belonged to the Hindu community. तो भैया की गोली लगी यहाँ पे। आप उनके साथ थे तब? वहाँ बिल्कुल साथ में था। कितनी बजे की घटना होगी ये? ये करीब 5 बजे के बाद की बात है, 5:30 के करीब की बात है। नहीं, हमारी कोई बहस वगैरह नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं भैया की, कोई बहस वगैरह नहीं थी। राजधानी स्कूल वाले हैं प्रिंसिपल, उनकी पूरी मिली भगत थी, मतलब उन्होंने पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये कांड किया गया था। 3-4 दिन पहले से ही उन्होंने ईंट मंगाई, ईंट चढ़ाई, ईंटें तोड़वाई। हम लोग तो ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जिन्होंने प्लान किया था, जो पहले से साजिश कर रहे थे, पहले तो उनको सजा की जाए और उसके बाद जहाँ पे ये प्लान किया गया है वो जगह ही बिल्कुल खत्म कर दी जाए, स्कूल तोड़ के समाप्त कर दिया जाए। एक बार वारदात हो चुकी है, क्या लगता है वो आदमी दोबारा वारदात नहीं कर सकता? Now, like I said, a whole ecosystem, for example, the Delhi Minority Panel report, which remember is under the Aam Aadmi Party Sarkar in Feb 2021, suggested this violence was a pogrom against Muslims. Several politicians also declared it a targeted attempt against the minority community. But today, the same lobby ought to have been silenced. If we talk about the reactions that have come in as far as this development is concerned, rather these 2 developments are concerned, shockingly, some still remain in denial. The opposition still continues to cast doubts on the police investigation. I have all doubt
about the investigation done by the police. It's a one-sided investigation. Even High Court has also made a very strong remark about the working of the police as far as making out the cases against a particular community. No, so far, no investigation has been done. I demand that there should be investigation by other agencies. The investigation was not very satisfactory, and several allegations were made against the investigators to be biased. In such a case where there are communal clashes between two communities, the investigators must do justice. जो लोग दंगों की राजनीति करते हैं वो आज यूपी में भी बैठे हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं। जो इसमें नुकसान जिनका हुआ, हिंदू थे या मुसलमान थे, दोनों गरीब थे। प्लांट किसने किया? ये है कि जो पश्चिम यूपी से, नोएडा से लेकर बागपत, मेरठ से जो लोग रात में बसों में भर के हिंसा के लिए दिल्ली में लाए गए, तो सेंट्रल आईबी हमारा क्या कर रहा था? Let's quickly open this up. We have BJP spokesperson Ashish Sood along with political analyst Binay Singh, also political analyst Ravi Srivastav and AIMIM Youth President and Advocate Mohammad Adil Hassan with us on the panel. Let me quickly begin by asking Mr. Hassan this, because you remember, sir, when investigations were on, arrests were being made, courts were stating as to what they made of the entire episode. The likes of Asaduddin Owaisi spoke of how this communal riot happened with full planning and preparation. In fact, it should be called a pogrom, not a riot. That's what he said. But today, with regards to the developments that have been coming in from the Karkarduma court, 9 people, I beg your pardon, have been convicted for arson and for theft in the Rekha Sharma case, and 8 accused have been charged with murder and arson in the Rahul Solanki case. We spoke to the family members of Rahul Solanki as well. Will you still continue to cast aspersions on the investigations? Because अभी तक तो आप investigations की बात कर रहे थे, कोर्ट पे भी क्या डाउट करेंगे, उस पे भी शक रखेंगे? कोर्ट पर न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। आप इससे पहले शर्जील, मेहरान, शगुफा, आसिफ, इकबाल और लोगों पर केस हुआ था, उस पर कोर्ट ने एक्विटल उनको दिल्ली राइट से किया है। लगातार 2-2 साल और 3-3 साल से जेल में। आखिर इंटेलिजेंस, जो भारत सरकार की इंटेलिजेंस, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? रागिनी तिवारी और कपिल मिश्रा जहर जो फैला रहे थे, उस पर सरकार क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस उस पर क्या करती है? आखिर बतलाइए कि जेएनयू पे हादसा होता है, जेएनयू में अभी तक मिस शर्मा नहीं दिल्ली पुलिस को मिलती है। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस स्टेट का क्या है? लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी गांधी सवारी में बैठ गए, क्यों नहीं वहां पे चले गए स्पॉट पर पीस के लिए? सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। राइट्स हुए, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सबका इन्वॉल्वमेंट बाहर आया, तो ये पोग्राम बार बार उसको कहने का कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था, ये कहने का क्या मतलब है? क्या आप नफरत नहीं फैला रहे हैं ऐसा करने से? और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशंस पे इतना शक बनाए रखे हैं शुरू से, मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला कन्विक्शन जो इस केस में हुआ था वो एक हिंदू पक्ष के इंसान का हुआ था, वो दिनेश यादव का था। तो ये जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, ये सिर्फ नफरत फैलाती है सर। कोई नफरत नहीं फैला रहा है। हम इंसान के खून कत्ल की बात करते हैं। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर सिर्फ बात नहीं है। सरदार पटेल जी की कुर्सी में बैठने से सरदार पटेल खूब पिलाना पड़ेगा, इंसाफ भी करना पड़ेगा। अमित शाह देश के गृह मंत्री है, वो क्या कर रहे थे? जस्ट आई वांट टू नो व्हाट दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस वर डूइंग। नेशनल प्रेसिडेंट अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे और क्या कर रहे थे? हाँ, उसके बाद जो युवा जो जामिया में जो एजुकेशन कर रहे थे, वो आज 3-3 साल से जो जेल में, उस पर क्या है? बट जो कोर्ट ने, जो करकरडूमा कोर्ट ने राहुल सोलंकी और रेखा शर्मा के केस में कहा, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे सर? उस पर आप चुप्पी बनाए रखेंगे? अभी आप फिर भी भाजपा से सवाल उठाते रहेंगे। आप सवाल उठा रहे हैं, तो लेट मी गो क्रॉस टू मिस्टर सूद। मिस्टर सूद, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज एलिगेशंस दैट कंटिन्यू टू बी लेवल्ड अगेंस्ट द बीजेपी, कंटिन्यू टू बी लेवल्ड अगेंस्ट द Delhi police, that the Delhi police did not properly carry out investigations, the Delhi police has not done its job right, and they continue to say that this was all biased all throughout? There is a chronology you have to understand. It starts from Jammu and Kashmir. You
find targeted killings there. You will not see Mehbooba Mufti criticizing even once, criticizing the terrorists, criticizing the people who kill the people. They will not do that. Similarly, Mr. Hassan is doing here. He is not condemning the violence. He is not condemning the people whom the court has implicated. What Hassan साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था. Hassan साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था. I came to you first. You made your point first. Please extend the same courtesy to your fellow panelists. Let them make their point. Hold on. ये सबको दिख रहा आपकी दुकान उजड़ती जा रही है. आप बेसब्रे मत होइए. उखड़ेगी सब दुकानें आपकी. जो ये हिंसा की दुकान आप चलाते हैं ना, ये सब उखड़ेंगी. जरा सब्र रखिए. अपनी बारी पे बोलिएगा. देखिए, all these people, they will cast aspersions on the investigators, the courts and others. They will not condemn what observations court have made and what they were talking during the riots. This is the real Delhi ke dango ka sach, what the court has observed in last few yesterday in its decision. Court has said, okay, can't question the court. You can question the Delhi police, can question the investigations, but can you question the court? These are very sensational observations that have been made by a Delhi court. Ravi Srivastava, how would you respond? Complete for 5 seconds. Give me 5 seconds. Sir, I'll come back to you. Let everyone have their say because we're running out of time. We have limited time here on this edition of news. But Ravi Srivastava. Christine, any kind of violence is condemnable, whether from any community, from any place. But the fact here is that in this particular case, the investigation was totally botched up, and none other than the courts only have observed that Delhi police has not done their job properly. You will say, what kind of the botched up? I can show you. See, what kind of reporters, channel reporters, were standing on the roof of Tahir Hussain and showing the bottles, the petrol bombs, the stores, this all touching everything and showing to people. Which court will accept that evidence? Nobody. So simple as this. These are the framing of charges. I'm not saying anybody is innocent or culprit. If they are convicted, they will be sent to jail. There is no sympathy for them. But the fact is, this kind of evidence will not be accepted. Because though you're citing Tahir Hussein's example, Binay Singh, let's talk about Tahir Hussain and the kind of plot he went ahead with as far as the Delhi riots are concerned, and the Supreme Court in fact has refused to give him any relief. Binay Singh. Has gone hopeless, shameless and jobless. And this is the same lot who once supported and allied with Simi and PFI. This is the same lot. When the President of the United States was on India's visit during that period, Delhi riots, they tried to paint an opposite picture of India. They said that India has turned into a majoritarian state and the Muslims are being targeted in Delhi. Right. While that story was very different. The story was totally opposite. And again, this riot, this Delhi riot, it was a planned massacre targeted to eliminate Hindu and force them to leave their properties in the Muslim majority or the Muslim majority neighborhood. Mohallas. And yes, Delhi riot was not organic. It was pre-planned. It was a war against India. And there are these convictions. There are more convictions in the line. There are many stories like Rahul Solanki and Sanjeev Kaushik. The enemical forces, the Bleeding India forces, the Dirty India forces want India to be in a state of chaos and conflict. They want India to be dismembered, and I am sorry to say that the political parties of these countries, the opposition of these countries, are hand in glove with those inimical forces of India. Okay. Yes. Okay, Mohammad Adil Hassan, since you're speaking of biased investigation, as per the Delhi police, they say that they've seen that 798 accused are Hindus and 812 are Muslims. This is with regards to what the court has also, in fact, admitted to with regards to the Delhi riots investigation. So how is it biased, sir? Because this whole narrative that has been built since the first day of how this is an attempt to target one particular community, this is a Muslim pogrom, all of that we've heard for the longest time. But when it comes to the courts, when it comes to these kind of observations, the courts now saying that one particular community was being targeted. Now are you going to give in to that particular version ki nahi yaar, Hindu community bhi shayad target pe thi, sir?
मैं मालेगांव में जिसने ब्लास्ट किया उसका तो पार्लियामेंट बीजेपी ने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है। क्या बीजेपी बात नहीं, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए हसन साहब। अगर आज कोर्ट आके कह रहा है कि टारगेटेड अटेम्प्ट था, स्टोन पेल्टिंग भी सिंगल आउट करके किया गया था, फायरिंग भी सिंगल आउट करके की गई थी, तो क्या आप एडमिट करेंगे, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, क्या कोर्ट की बात मानेंगे? सर, कार्रवाई किया बीजेपी ने कपिल शर्मा पे, क्या कार्रवाई हुआ? हसन साहब, आप मेरे सवालों का तो जवाब देना जरूरी नहीं समझते, तो आई लेट रवि श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड। रवि श्रीवास्तव, क्विक रिस्पॉन्स। What Mr. Amit Shah was doing? Kurtzwin, it's a fact that the fault is from both the sides. It was a communal riot and a full-blown communal riot, but it's a fact that that investigation was very much biased. That Kapil Sharma was standing with his hand on the ACP's shoulder and threatening the community. You don't recall Anurag Thakur, the central minister, sir, if you can take giving the note slogans there. Kapil Sharma having provoked many, why aren't you taking note of Tahir Hussain? Kapil Mishra, I beg your pardon, Kapil Mishra provoking many, why aren't you taking note of Tahir Hussain also provoking many, him also being held responsible by the court, him also facing money laundering charges in the 2020 Delhi riots case? We can't be selective, and that's the only limited point I'm making. We're running out of time, gentlemen. Thank you for joining us this evening on The Debate.